Student, see question. Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. Student, इस क्वेश्चन के लिए अगेन हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मानना पड़ेगा एंड अगेन कुछ b यहां पर डिवाइजर मानना पड़ेगा, डिवाइजर. सो लेट a be any positive integer and b is equal to 3. स्टूडेंट यहां मैं b को 3 क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 3 का यहां हमें क्यूब करना है एंड 3 का क्यूब क्या होता है 27 एंड 27 में इजीली 9 को कॉमन लिया जा सकता है. आगे आप देख लेंगे क्वेश्चन में. So therefore, by Euclid's division lemma, a can be written as a is equal to 3q plus r, where q is any positive integer greater than equal to 0 and r is equal to 0, 1 or 2. Since r is greater than equal to 0 and less than 3, because 3 is here divisor. So यहाँ पर 3 cases arises होते हैं. When r is equal to 0, a is equal to 3q. When r is equal to 1, a is equal to 3q plus 1. And when r is equal to 2, a is equal to 3q plus 2. So take first case, when a is equal to 3q. So a cube will be 3q whole cube, that is 27q cube. Student, यहाँ से अगर हम 9 कॉमन ले ले, that will become 9 bracket 3q cube. So that can be written as 9m, where m is equal to 3q cube. Any positive integer. Now see the second case, when a is equal to 3q plus 1. So a cube will be 3q plus 1 whole cube. Student, यहाँ a plus b का whole cube का फॉर्मूला लगाइए और एक्सपेंड कीजिए. So first term will be a cube, that is 3q cube, that will 27q cube, plus b cube, that is 1 cube, plus 3a square b, that is 27q, 3 into 9q square. Now second is 3ab square, that is 3 into 3q plus 1 square, that will become 9q. Now student, 27q cube, 27q and 27q square plus 9q. इनमें से आप 9 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट? 9 ब्रैकेट 3q स्क्वायर, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q एंड प्लस 1 ये रिमेनिंग था, ये यहां लिख दिया. Now this can be written as 9m plus 1, where m is equal to 3q square plus 3q cube plus 3q square plus q, or any positive integer. Now see the third and the last case, when a is equal to 3q plus 2. So a cube will be 3q plus 2 whole cube. Again expand कीजिए, that will become 27q cube plus 54q square plus 36q plus 8. Now student, 27q cube plus 54q square plus 36q में से आप 9 कॉमन ले सकते हैं, that will become 9 bracket 3q cube plus 6q square. 54 में से 9 गया तो 6 एंड 36 में से 9 गया तो 4q एंड प्लस 8 यहां पर हम ऐसे ही लिख देंगे. नाउ सी दैट कैन बी रिटन एज a cube is equal to 9m plus 8, where m is equal to 3q cube plus 6q square plus 4q, any positive integer. So cube of any positive integer can have any form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. So we have shown the question.